आइए देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज की न्यूज से रिलेटेड डेली वैल्यू एडिशन नोट्स का स्क्रीनशॉट आप वीडियो के एंड में ले सकते हैं। प्रीलिम्स रेलेवेंट इंपॉर्टेंट न्यूज। तमिलनाडु गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ग्रीटिंग चीफ मिनिस्टर एंड टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं सी जोसेफ विजय एंड साथ ही साथ आसाम में बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा who will take oath as Assam CM tomorrow. Prelims important news. CM unveils scheme for youth leaving institutional care at 18. Aftercare scheme launch हुई है for young persons to provide assistance for higher education, skill development, employment opportunities of rupees 3.5 crore as a scheme for Delhi government. Mains GS1 Indian culture important news. The crumbling of Awadh. A recent CAG report has drawn attention to many monuments in UP that have faced extensive encroachment. Heritage conservationists fear that without immediate intervention, the composite syncretic legacy of Awadh will be lost. This becomes an important article for society and Indian heritage. Mains GS3 economy important news. Andhra Pradesh plans perfection hubs to help local products gain global brand recognition. Andhra Pradesh government recognize करेगी global brands को under the scheme Product Perfection Clusters in the Amravati, Vishakhapatnam and Tirupati economic regions. This will elevate local manufacturing to international standards by providing necessary support to industries such as MSMEs and quality control standards, etc. This page becomes very important. First news is related to Mains GS2 Polity Perspective, which covers governor's role in government formation. This is a very important news from Mains perspective. Another one is Geography Focus Mains GS1. What measures are needed to address Delhi heat crisis? So this overall page becomes very important for UPSC aspirants. Mains GS2 IR important news. 8 MOUs inked during Jaishankar's Trinidad visit. So recently, India and Trinidad have signed pact to help diaspora trace ancestral roots. New Delhi के efforts हैं to preserve the legacy of the Girmithia community. Girmithia community refers to the Indian indentured laborers transported by the British to colonies in Fiji, South Africa, Mauritius and Caribbean between the 19th and early 20th centuries. Around 8 MOUs have been signed. उसे पढ़ना हमारे IR के लिए important हो जाता है। आज के न्यूज से रिलेटेड डेली वैल्यू एडिशन नोट्स विद पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स, डायग्राम्स एंड केस स्टडीज ये हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। बाय बाय।